Hi everyone, in this video we are going to cover chapter 5 risk models part 2. We have already discussed value at risk and country risk, and in this we will be covering stress testing and scenario analysis. So let's start. So in the part 1 of chapter 5 risk model we have discussed value at risk and country and sovereign risk models and management. In country risk, we discuss types of country risk, that is political risk and financial and economic risk. Under political risk, we discuss five types of risk: nationalization or expropriation risk, exchange control risk, taxes, rule and regulation risk, inefficient legal system, and reputation of contracts. We also discuss the country risk management process, which is similar to risk management process, that is identification of risk, then analyzing the risk which has been identified, then evaluating the various types of risk management techniques through which the risk which is identified can be mitigated, then selecting the suitable techniques out of the techniques which has been identified, then implementing the same, and then controlling that whether the technique which has been utilized and implemented was effective or not. Then we studied the country risk assessment tools, that is qualitative as well as quantitative. Qualitative tools like numeral coding, color coding, combination of numeral and color, etc. And in the quantitative tools, we read about corruption perception index, democracy index, freedom in the world, Gini coefficient. So all this and quantitative tools जो इसमें दे रखे हैं ना country risk assessment में, they are very important. आप उनको read करके जाना because they are बिल्कुल ही different. अगर आप कहीं पे भी क्वेश्चन पेपर में रीड करते हो about corruption perception index, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि where you can find the same under country risk assessment tools and the quantitative tools. Then going forward, we read about value at risk. What is value at risk? The maximum loss that can be suffered if the amount is invested. This calculated through holding period and confidence level. और उसके अंदर अपन को जैसे कॉन्फिडेंस लेवल फॉर एग्जांपल वी आर कैलकुलेटिंग एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, तो फिर सिर्फ अपन 95% तक का ही वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड द 5% जो टेल बचता है उसके लिए अपन ने रीड किया था एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल के, दैट वी नीड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल बिकॉज वैल्यू एट रिस्क डज नॉट आंसर द सेम. Then we read about coherent risk measures, that are कौन से ऐसे रिस्क मेजर्स हैं which tells us about the diversification effects का benefit. So उसके लिए पहले फोर प्रॉपर्टीज जो भी रिस्क मेजर सेटिस्फाई करेगा, only that risk measure is called coherent risk measures. And what were the properties? Subadditivity, homogeneity, monotonicity, risk-free condition, etc. So value at risk subadditivity को fulfill नहीं करता, that's why it is not a coherent risk measure. Because value at risk में जैसे ही पोर्टफोलियो का साइज इंक्रीज होता है या नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज इंक्रीज होते हैं, वैसे ही उसका वैल्यू एट रिस्क का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है. जबकि सबएडिटिविटी कहता है कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो या तो इक्वल होगा या कम हो जाएगा जैसे ही आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे, बट डाइवर्सिफाई का बेनिफिट वैल्यू एट रिस्क नहीं देता. सो वैल्यू एट रिस्क इज नॉट अ कोहेरेंट रिस्क मेजर, बट expected shortfall fulfills the same, and expected shortfall is one of the most attractive coherent risk measure. Then अपन ने expected shortfall के advantages पढ़े in comparison to value at risk. Then we read some limitations of value at risk, that is uninformative of tail losses, discourage diversification, which is not sub-additive, etc. But now today we are going to discuss about stress testing and scenario analysis. Firstly, stress testing is generally done by banks. Mostly banks जो होते हैं वो stress testing करते हैं. Earlier stress testing was done only for the capital adequacy purposes to find out कि अगर कोई stress event आ जाए, then whether the capital is adequate with the bank, कि वो जो भी event occur हो उसके बाद भी the capital is sufficient कि बैंक चलता रहे. So पहले सिर्फ stress testing capital adequacy के लिए होती थी, लेकिन अभी बहुत सारे reasons से होता है. So various reasons for incorporating stress testing. कुछ reasons जो है उसके, some of them are: first, finding constraint. स्ट्रेस टेस्टिंग एक कंस्ट्रेंट डेवलप करता है जिससे कि यू आर श्योर कि आप ये वाला प्रोजेक्ट ले सकते हो या नहीं, बिकॉज एक आपको एक बाउंड्री दे देता है कि मैक्सिमम इतना लॉस, इतना कैपिटल एडिक्वेसी, इतना सफिशिएंटली फुलफिल कर रहा है, देन ओनली यू आर एबल टू इन्वेस्ट इन दैट पोर्टफोलियो, अदरवाइज यू कैन नॉट. Then second, management attention. If there is any event which stresses so much कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी फेल हो रहा है, आपका पूरा बिजनेस फेल हो सकता है, तो मैनेजमेंट का अटेंशन को अट्रैक्ट करता है स्ट्रेस टेस्टिंग का वो रिपोर्ट. Then intuition. Whenever you are going to make any decisions for investment, if you are going to use intuition, then stress testing can be a good basis for your intuition decisions. Then transparency and consistency. So these are some of the reasons why stress testing could be taken place and why stress testing has been developed into other places also. From capital adequacy, it has been increased, its scope has been increased. So what are the applications of stress testing जो कि अभी अभी नए ऐड हो चुके हैं?
So, examples of such extended use of stress testing are risk reporting, strategic planning, risk appetite limits, use of stress testing by banks. ये सब अभी अपन. So first, starting with risk reporting. Risk reporting. Stress testing results are often used to report levels of risk in business activities. So how much risk is there in every business activity? उसको report करने के लिए भी stress testing is being utilized. For example, by reporting the credit losses by portfolios in various stress events would cause in specific portfolio या फिर business unit का कितना contribution रहेगा, etc. Then second, strategic planning. These results are increasingly integrated into business planning as institutions look to understand the impact of stress scenarios on alternative strategies. Means अगर आपके पास stress events के सारे events हैं, you know the possibilities, maximum loss कितना हो सकता है, so accordingly you can make a good plan, आपकी strategy defined हो सकती है. Then third, risk appetite. Stress testing के according you get to know कि आपकी risk appetite कितनी हो सकती है maximum, because stress testing gives you results कि अगर situation बिल्कुल बुरी से बुरी हो गई, अगर कोई ऐसा stress event आ गया, then also आपका risk कितना है, then also आपका loss कितना हो सकता है. Then stress testing set the limits. Stress testing expressions of risk appetite are often cascaded into limits at the enterprise level. एक लिमिट सेट करता है कि इतना रिस्क अपन ले सकते हैं, इतना कैपिटल अपने को चाहिए, इतने कैपिटल पे अपन इतना इन्वेस्टमेंट करें बिकॉज इतना एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए होगा, इतना एक्स्ट्रा रिस्क हो सकता है, एक्सेट्रा. देन रीडिंग अबाउट यूज ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग बाय बैंक्स. तो बैंक्स कहाँ पे स्ट्रेस टेस्टिंग को यूज करते हैं. फर्स्ट, कैपिटल एडिक्वेसी विच वाज द ट्रेडिशनल मेथड, कि पहले से फर्स्ट में जैसे रेगुलेटर्स ने फॉलो करने को बोल दिया था कि स्ट्रेस टेस्टिंग नीड्स टू बी फॉलोड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, ensuring institution maintains sufficient capital in line with risk appetite. और इसके key challenges, managing between regulatory stress testing based and economic capital use of required capital and risk. Then what is the second use? Risk measurement and reporting. Risk measure करना और report करना through stress testing. Then risk appetite statement develop करना. Then stress testing also helps banks in planning, contingency planning, strategic planning, financial planning and budgeting, etc. It also helps in limit setting, that is setting risk limits at business product and portfolio level. Then it also helps in risk measurement against limits. So you have set the limits, uske against mein risk ko measure karna, that whether it is breaching the limit or it is within the limits. Then it also helps in capital allocation, performance measurement and management, pricing, etc. Then going forward, so stress test process. 7 steps are there to complete a stress test process, starting with scenario development, historical and hypothetical, जो कि अपन पूरा समझ पाएंगे when we will discuss scenario analysis. So developing various types of scenarios, which we will be discussing in scenario analysis. Then second, risk exposure segmentation, historical loss analysis, macro variables loss relationship assessment, scenario analysis, current portfolio impact, portfolio de-risking plans, and capital policy decisions. So first, let's discuss scenario analysis. So what is scenario analysis? First, different kind of scenarios are developed. कि अगर आपका फर्स्ट केस सिनेरियो है, आपका बेस्ट केस सिनेरियो बनाएंगे, नॉर्मल सिनेरियो बनाएंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज डेवलप करते हैं कि हर सिनेरियो में व्हाट विल बी द सिचुएशन, कितना रिस्क होगा, बिजनेस कैसे उससे रिएक्ट करेगा. सो एवरीथिंग इज डेवलप्ड देयर. So there are categories of stress scenarios. 4 types of stress scenarios have been given by the ICI module: normal stress scenarios, severe stress scenarios, near default stress scenarios, and stress to default scenarios. First, normal stress scenarios. Occurrence of these scenarios can be once or twice in 10-year period. This type of scenarios are manageable within the normal rules and responsibilities of daily decisions. तो इतने ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होते. नॉर्मली सिचुएशन में जो कि प्रॉब्लम्स आ सकती है, नॉर्मली वैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और इतना जल्दी अकरिंग भी नहीं होती है, एंड दे आर मैनेजेबल इजीली. Then second, there are severe stress scenarios, जो कि काफ़ी सीवियर होते हैं. फॉर एग्जांपल जो 1991 में अपना जो हुआ था कि अपने पास बहुत कम फंड बचा था, लिक्विडिटी, जिसकी वजह से अपने एलपीजी पॉलिसीज लाए थे, तो उस टाइप के सीवियर स्ट्रेस सिनेरियोज दैट वन वुड एक्सपेक्ट ओनली वंस और ट्वाइस इन अ प्रोफेशनल लाइफ टाइम. पूरे लाइफ टाइम में एक या दो बार देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द 2 oil shocks in 1970s triggered unusually severe economic consequences. Then नियर डिफॉल्ट स्ट्रेस सिनेरियोज, तो ऐसा स्ट्रेस सिनेरियो जो ऑलमोस्ट अपने बिजनेस को डिफॉल्ट के लेवल तक ले आया था, बट
बच गए अपन, लेकिन वो बिल्कुल डिफॉल्ट होने ही वाला था वैसा वाला स्ट्रेस सिनेरियो. फॉर एग्जाम्पल, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस दैट बिगिन in late 2008 falls into this categories. And because of that event, some institutions came close to default but were able to weather the storm without assistance from the government. The बिल्कुल default के level तक पहुंच गए थे but were able to revive on their own. Then stress to default scenarios or reverse stress scenarios. ऐसा जिसमें institutions fail ही हो गए. Some institutions failed during global financial crisis and these were stress to default scenarios. ऐसे scenarios जिनका stress इतना ज़्यादा था that led to the default only. Then scenario में second one that needs to be read is scenario selection. अपन ने जैसे अलग अलग टाइप के सिनेरियो सिलेक्ट करते हैं कि दे आर बेस्ट केस सिनेरियोज और वर्स्ट केस सिनेरियोज और नॉर्मल केसेस. तो सिनेरियो का सिलेक्शन कैसे हो सकता है? तो सिनेरियोज आर सिलेक्टेड बाय एक्सपर्ट्स, वेरियस प्रोबेबिलिटीज, वॉलेटिलिटी, मार्केट को पूरा स्टडी करके कि कितने टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं. देयर आर स्टैटिक सिनेरियोज डेवलप किए जाते हैं, डायनामिक सिनेरियोज डेवलप किए जाते हैं. सो ऑन दैट बेसिस सिनेरियोज आर सिलेक्टेड और उस सिनेरियो के सिलेक्शन के बाद फिर स्टडी किया जा सकता है कि उस किस सिनेरियो में कितना लॉस होगा, किस सिनेरियो में कितना प्रॉफिट हो सकता है, एक्सेट्रा. सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ सिनेरियो एनालिसिस? जैसे अपन ने डिस्कस किया कि सिनेरियो वेरियस काइंड्स ऑफ सिलेक्ट हो सकते हैं. सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक तो यही है, देयर इज वेरी मच वॉलेटिलिटी, इट कैन लीड टू नंबर ऑफ सिनेरियोज बीइंग डेवलप्ड. कभी और इतने सारे सिनेरियोज हो जाएंगे दैट यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि कौन सा सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा है, हाउ मच प्रोबेबल द सिनेरियो इज. तो फिर सिनेरियो एनालिसिस का पूरा जो रीजन है, पूरा जो इफेक्टिविटी है, वो इम्पैक्ट हो जाता है. So with a smaller number of risk factors, the number of alternate scenarios is manageable. But as the number of risk factor increases, the number of alternative scenario could easily become unmanageable. This is one of the drawback. Another drawback is that it assumes that the scenarios are equally probable, and this ignores the correlation between risk factors. बिकॉज हर रिस्क का प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, सो अकॉर्डिंगली हर सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग है. बट सिनेरियो एनालिसिस अज्यूम करता है कि हर एक जो भी सिनेरियो डेवलप हुआ है वो इक्वली प्रोबेबल है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. And although stress testing does allow risk managers to identify major risk, it is subjective in deciding how serious the risks are. And the risk manager could generate an even larger number of scenarios and uncover more extreme events. बिकॉज कहीं ना कहीं पे तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा. लाइक अपन करते हैं ना, सैम्पलिंग करते हैं ऑडिट में, क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो कि वहाँ पे रिस्क है लेकिन वो मैनेजेबल है और कहीं ना कहीं पे तो अपन को स्टॉप होना ही पड़ेगा. तो सिमिलर इज द केस इन सिनेरियो एनालिसिस. हो सकता है कि अपन ने जितने सिनेरियो डेवलप किए उससे कई गुना ज्यादा सिनेरियो और भी हों, बट एक लिमिटेशन है कि आप इतना ही मैनेज कर सकते हो. सो इसकी वजह से कुछ ना कुछ रिस्क एरिया अनकवर्ड रह जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ सिनेरियो एनालिसिस. देन सिनेरियो एनालिसिस में लास्ट पॉइंट है कि बेसल कमिटी ने जो भी ऑन बैंकिंग सुपरविजन प्रिंसिपल्स फॉर साउंड स्ट्रेस टेस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोविजंस दिया है. सो ये जो प्रिंसिपल्स है, दे आर 21 प्रिंसिपल्स हैव बीन गिवन. नॉर्मल है, जैसे फर्स्ट स्ट्रेस टेस्टिंग शुड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट कल्चर. कि स्ट्रेस टेस्टिंग आपका रिस्क मैनेजमेंट कल्चर का पार्ट होना चाहिए. बैंक शुड ऑपरेट अ स्ट्रेस टेस्टिंग प्रोग्राम जो प्रमोट करे रिस्क आइडेंटिफिकेशन को, कंट्रोल को. देन थर्ड, stress testing program should take into account of views from across the organization, cover a range of perspective and techniques, should have written policies and procedures, should have suitably robust infrastructure, should maintain and update its stress testing framework from time to time, should cover a range of risks and business areas, should cover a range of scenarios, feature a range of severities. Then as part of an overall stress testing program, a bank should aim to take into account simultaneous pressures in funding and asset markets. Effectiveness of risk mitigation technique should be systematically challenged. ऐसा नहीं कि आपने एक बार रिस्क मिटिगेशन टेक्निक डेवलप कर ली, सो यू आर नॉट टेस्टिंग द सेम. आपको टेस्ट करते रहना है कि क्या रिस्क मिटिगेशन टेक्निक जो आपने डेवलप की थी, क्या अभी भी वो इफेक्टिव है या नहीं. Then stress testing program should explicitly cover complex and bespoke products. Stress testing program should cover pipeline and warehousing risk. Then 14 point, bank should enhance its stress testing methodologies to capture the effect of reputational risk. Then bank को enhance करना चाहिए इसका stress testing procedure for highly leveraged counterparties के लिए अलग से करना चाहिए. Then supervisor should make regular and comprehensive assessment of bank's stress testing program. Then it require management to take corrective action if material deficiency is there. Then should assess and if necessary challenge the scope and severity. तो ये सारे 21 पॉइंट्स हैं जो मैंने नॉर्मली जनरली डिस्कस किए हैं, बट यू शुड रीड ईच एंड एवरी पॉइंट ढंग से, बिकॉज अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आता है सो इट्स डायरेक्ट आंसर. आप डायरेक्ट लिख सकते हो बट एक बार आपको अच्छे से रीड करना है.
सो ये अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया सिनेरियो एनालिसिस. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? बचा है अपना सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट का प्रोसेस. तो स्ट्रेस टेस्ट के प्रोसेस में फर्स्ट तो हो गया सिनेरियो डेवलपमेंट. मतलब सबसे पहले आपने क्या किया, सिनेरियो एनालिसिस के लिए जो वेरियस टाइप्स ऑफ सिनेरियोज डेवलप कर रहे थे अपन, वो किया ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज हाइपोथेटिकल. तो आप हिस्टोरिकल के बेसिस पे, पास्ट के बेसिस पे, एज वेल एज फ्यूचर को देखते हुए कि क्या क्या इवेंट और एक्स्ट्रा हो सकते हैं जो हिस्टोरिकली नहीं हुए लेकिन फिर भी हो सकते हैं. सो ऑन दैट बेसिस सिनेरियोज आर डेवलप्ड. एंड सेकेंड इज रिस्क एक्सपोजर सेगमेंटेशन. आपने सारे सिनेरियोज डेवलप कर लिए, अब आप सेगमेंट कर दो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एक्सपोजर. जैसे कि अपन ने बैंक्स में भी देखा है कि एवरी बैंक हैज अ ऐसा फिलोसॉफी और ऐसा पूरा प्रिंसिपल्स डॉक्यूमेंट होता है कि आप किस एरिया में कितना एक्सपोजर रखोगे. कि हमने इंफ्रा में इतना इन्वेस्ट कर रखा है, इतना इंफ्रा सेक्टर को लोन दे रखा है, इतना हम रिटेल में देंगे, इतना हम कॉर्पोरेट में देंगे. तो रिस्क एक्सपोजर के बेसिस पे सेगमेंटेशन कर दो. देन आपके पास रिस्क एक्सपोजर का सेगमेंटेशन भी आ गया. देन यू हैव टू एनालाइज कि हिस्टोरिकली उसके बेसिस पे कितना लॉस हुआ था. देन मैक्रो वेरिएबल्स लॉस रिलेशनशिप असेसमेंट, कि आपका हिस्टोरिकली लॉस इतना हुआ था तो उसकी वजह से आपका फ्यूचर में कितना लॉस हो सकता है, तो उसका रिलेशनशिप असेस करो. देन सिनेरियो एनालाइज करो कि करंट पोर्टफोलियो पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हिस्टोरिकल एज वेल एज हाइपोथेटिकल स्टडी का. देन पोर्टफोलियो डी रिस्किंग प्लान्स, दैट इज अपन ने जो भी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पढ़ी थी ना, कि अपन को क्या करना है. अब अगर आपका सिनेरियो एनालाइज करने पर डिसाइड होगा आपका कि वेदर यू नीड टू अवॉइड द रिस्क, वेदर यू नीड टू मिटिगेट द रिस्क, मिटिगेट में भी कैसे करना है, whether you should transfer the risk, etc. That is portfolio de-risking plans. And then finally, capital policy decisions. फिर आपको कैपिटल पॉलिसी डिसीजन लेने हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर पोर्टफोलियो डी रिस्किंग प्लान्स, कि आपकी कैपिटल को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कितना एडिक्वेट रखना है, कितना रिस्क के लिए एक्स्ट्रा अलग निकाल के रखना है कि वो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, बट दैट नीड्स टू बी सपोर्टेड, दैट नीड्स फॉर द सपोर्ट ऑफ द बिजनेस रनिंग स्मूथली. सो ये हुआ अपना स्ट्रेस टेस्ट प्रोसेस. This chapter 5 risk models, we covered 4 topics: value at risk, stress testing, scenario analysis and country risk. So ये बहुत important है and you try to remember it. अपन समरी जब अपन करेंगे तो we will only try कि अपन बस इस points को discuss करें ज़्यादा से ज़्यादा, so that आपको याद हो जाए बस, और कोई समरी का reason नहीं होता. And for covering the chapter you can refer part 1 and part 2, but ये अभी chapter अपना finish हो चुका है and now we will be covering chapter 6. Thank you.